Now see what we had done is in yesterday's session we had created the employee route, right? एक minute, huh? And in employee route we had created this hard coded array, JSON array, and then we tried to display this hard coded JSON array, right? But suppose that now I don't want this hard coded data. As I told you that I want it should be coming from the backend. It should be coming from the API. So now we don't have a real API, but okay, I can create a mock API. I can create a mock API in React, in React app. मतलब जिनके पास real API नहीं है, so they can create a mock API and then they can test the integration and do the integration with that mock API, and it is exactly same. It is absolutely same. So सिर्फ आपको एक URL change करना है and then you can integrate your same React application with the actual API. So the thing is like I want the data to be coming from API. Now we know that API actually takes the data from the backend. Backend मतलब जो डेटाबेस आता है, डेटाबेस से मौके आपके एपीआई के पास डेटा आता है और API is going to give it to the front end application, that is a React application. Now, how do I create a mock API in React application? So let me just show the assignment. So today we are going to create mock API and integration of React application with API. Okay, if you are having a real API, you can definitely do it as an assignment. Okay, just give me a minute. I'll be just back in a minute. Give me a minute.
Okay, sorry for interruption. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So now see, React में there is well, not only in React basically, npm package is there. One of the npm packages there, which we can use whenever we have to create the mock API. So firstly, that which is that package. There is a package called as JSON server, which is used to create the mock API. So यहाँ पे I'm going to in the terminal I'm going to say npm install JSON dash server. I'm going to install JSON dash server. So this is the command that you have to run to install. Okay, open your project or maybe open your terminal. Open the terminal and install the JSON server package. So this is your command npm install. Now, so here you can see that the package is installed. तो पैकेज इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, आपका आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट में रिएक्ट प्रोजेक्ट, ओके, इन दिस प्रोजेक्ट नॉट इनसाइड एनी फोल्डर. So be sure that your file is outside the src folder also, and the file name must be db.json. File name mandatory should be db.json. So in the project folder, create a file named db.json. Okay, so ये हमने create किया. Now here I'm going to create the collection. मतलब अगर एपीआई है, समझो आपके पास प्रोडक्ट एपीआई है, तो जो आपके जो भी डेटाबेस रहेगा, फिर वो मोंगोडीबी हो या ओरेकल हो या माइस्क्ल हो, आपका एपीआई जेसन फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करता है. ऑलवेज रिमेम्बर दैट सपोज दिस इज योर डेटाबेस. डेटा जो है वो किसके पास जाएगा? इट विल बी गिवन टू द जावा यूजिंग .NET और यूजिंग hosted on some server. सर्वर है ना, डेटाबेस सर्वर जहाँ पे डेटाबेस है. डेटाबेस सर्वर मतलब जहाँ पे डेटाबेस है, एक्चुअल डेटाबेस रिसाइड कर रहा है परमानेंटली. Then you are going to have a API which is running on its own server. Now this API provides the data in which format? JSON. Do you agree with this? API will always provide the data in the, what is the full form of JSON? Tell me, what is the full form of JSON? JavaScript object notation. करेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन. की वैल्यू पेयर में आपका डेटा होता है, राइट? की वैल्यू पेयर में आपका डेटा होता है. ओके, कीज आर आल्सो स्ट्रिंग, वैल्यू इज आल्सो इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट. तो जेसन फॉर्मेट इज अ लाइटवेट फॉर्मेट टू ट्रांसफर द डेटा. तो आपका एपीआई वो कौन से फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करेगा? जेसन फॉर्मेट में. बट अगर मुझे इस डेटा को एक्सेस करना है तो मुझे इस एपीआई को अलग अलग रिक्वेस्ट भेजने होंगे with different http verbs, with different http verbs. Which are the different verbs? Get, then उसके बाद put, then delete. yes, मतलब आपका एपीआई आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, बट वो एंड पॉइंट पे एक यूआरएल पे प्रोवाइड करेगा.
क्योंकि एपीआई सर्वर पे रन हो रहा है। स्लैश प्रोडक्ट्स समझो। तो इस प्रोडक्ट्स में, इस यूआरएल पे, ओके, ये एपीआई डेटा प्रोवाइड करेगा। ये एपीआई क्या करेगा, डीबी सर्वर से कनेक्ट करेगा। डीबी सर्वर पे आपका प्रोडक्ट नाम का टेबल है, वहां से डेटा लाएगा, और वो डेटा इस यूआरएल पे अवेलेबल है। तो अगर आप गेट रिक्वेस्ट भेजते हो, तो आपको होस्ट रिक्वेस्टमेंट व्हाट, यू आर एडिंग अ डेटा इनटू डेटाबेस। तो समझो ऑलरेडी 3 रिकॉर्ड है, तो फोर्थ रिकॉर्ड विल बी एडेड। पुट रिक्वेस्ट मतलब क्या होगा, टेल मी, व्हाट विल बी द ऑपरेशन अपडेट। रन ऑन डेटा? अपडेट द डेटा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन अपडेट करना है। डिलीट मतलब क्या होगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स जो भी रिकॉर्ड्स है उसमें से एक हो जाएगा, राइट? सो बेसिकली इस यूआरएल पे आपका डेटा जो है, आपके एपीआई ने अवेलेबल किया है। उस डेटा पे आपको अगर अलग अलग ऑपरेशन प्रोवाइड करने हैं, परफॉर्म करने हैं, तो यू आर गोइंग टू रिक्वेस्ट विद डिफरेंट डिफरेंट एचटीटीपी वर्ब्स। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? यस, Yeah. इज इट अंडरस्टूड? ओके। सो अभी हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन है। वी आर हैविंग अ रिएक्ट एप्लीकेशन। तो रिएक्ट एप्लीकेशन क्या करना चाहता है, रिएक्ट एप्लीकेशन उस डेटा के साथ काम